our next session is on funding for climate change, adaptation and mitigation. जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कल से सुन रहे हैं, we were talking about बहुत अलग अलग तरीके का क्लाइमेट का क्राइसिस की बातें कर रहे हैं, उसकी मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं. सो अभी का जो सेशन है, आई थिंक इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. पीपल वेर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके का फंडिंग रिक्वायरमेंट है, क्या सिनारियो है. So for this, the moderator of the session will be Mr. Shashank Rastogi from Bridgespan group. I did not introduce Shashank. I think many of you know because he has been a regular in our Samagam. Shashank, he works very closely with the CSR organizations, philanthropic foundations, and NGOs to create strategies and promote a just and equitable future. So, Shashank. Next, candidate is Mr. Amit Arora. We were development finance for this World Bank Group. Amit, Amit is a development finance specialist in the World Bank Group, bringing over 27 years of diverse experience in the financial sector. He began his career in 1996 at ICICI Bank and has since worked with many other banks, and Amit has focused on rural finance as a senior rural finance specialist with GIZ, concentrating on rural cooperatives, agricultural finance, and digital finance inclusion. Welcome, Amit. Next to join the panel is Mr. Binoy Menon, Regional Manager, ITC Limited, Social Investment. Binoy is a development professional with over 14 years of experience in CSR, sustainability and climate change. And he is currently serving as the Regional Manager East at ITC Social Investment in Kolkata. So Binoy is passionate about driving the sustainable development and climate action through collaboration. And he excels in project design, stakeholder engagement and team leadership. So thank you, Binoy, for joining us. Our next guest is Ms. Matilda Lobo, Head Corporate Social Responsibility, IndusInd Bank. Matilda has over 26 years of diverse global experience in banking and financial services, covering areas such as strategy, business development, risk management, corporate banking, trade financing, ESG, and CSR. She has a championship in the bank's CSR strategy, focusing on the economic empowerment of marginalized communities through comprehensive rural development. Welcome, Matilda. Thank you for joining. Our next guest is Mr. Siddharth Bhatia, Lead Earth Exponential Indian Climate Collaborative. Siddharth currently leads Earth Exponential, an initiative by the India Climate Collaboration focused on unlocking corporate philanthropy by connecting business with high-impact climate projects in India. He has extensive experience collaborating with various stakeholders to build climate resilience across key sectors such as agriculture, natural resource management, urban and rural systems, energy and infrastructure. Last but not least, our guest is Mr. Abhinav Sen, Vice President, Axis Bank Foundation. Abhinav is a development professional with nearly 15 years of experience in CSR and international NGOs, currently serving as the program lead at the Axis Bank Foundation. He has primarily focused on the Central India landscape throughout his career. Thank you, and I wish you all the best for this discussion. Thanks, Shashank. Am I audible? Check. Okay, sorry. टेक्नोलॉजी से ज़्यादा समझ नहीं है. So ये पैनल शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट. मेरे पास एक महारथियों का पैनल है, पर
इसके बाद जो पैनल आने वाला है, मानस जो करने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी सारे महारथी आ रहे हैं। तो ये पैनल से कोशिश हमारी होगी कि हम उन महारथियों के लिए थोड़ा काम मुश्किल बनाएं। तो इसलिए दो चीज़ों पे हम केंद्रित करेंगे अपना कॉन्वर्जेशन। एक तो ये कि अभी जो हमारे जो पैनल है उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के फंडर्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन है, CSR है, कॉर्पोरेट फाउंडेशन है, फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशंस की एक समझ है। तो अभी क्या हो रहा है, कहाँ प्राथमिकताएं हैं फंडर्स की और क्या गैप्स हैं, क्योंकि मानस का जो पैनल है उनके लिए ये प्रश्न है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर हम गैप्स अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे तो उस पैनल के लिए थोड़ा काम मुश्किल बनेगा। तो इस अनुरोध के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। अमित, आपसे शुरू करूँगा कि ग्लोबल स्केल पर इफ़ वी लुक एट ग्लोबली, what are the priorities for multilateral and bilateral development agencies when it comes to climate mitigation and adaptation? तो आपकी संस्था के जैसी संस्थाओं की प्राथमिकताएं क्या रहती हैं? मैंने सुबह आकर के कुछ सेशन सुने और द काइंड ऑफ इम्पैक्टफुल वर्क दैट आई गॉट टू सी, द इनोवेटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग ज़मीन पे, तो मुझे लगा हमारा सेशन बहुत बोरिंग होने वाला है। बोरिंग बैंकर गिविंग नंबर्स बिफोर लंच, परफेक्ट रेसिपी टू मेक पीपल स्लीप। बट नेवरदलेस आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। MDBs और बायलैटरल्स सभी के कमिटमेंट्स in the areas of climate finance, be it mitigation and adaptation, and not just commitments, the numbers which are coming up in terms of financing बढ़ रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो या कोई भी और हो। और जैसे उदाहरण के तौर पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इन्वेस्टमेंट पिछले साल 23-24 में करीब $45 billion का रहा है इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। दिस इंक्लूड्स IFC, IBRD, IDA और लगभग और कमिटमेंट है 2025 तक उसको 45% ऑफ ओवरऑल लेंडिंग करने का। इसी प्रकार से ADB का कमिटमेंट स्टार्टिंग 2019 to 2030 करीब $100 billion का है इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस ओनली इन एशिया एंड पैसिफिक, विच इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव नंबर। But ये numbers, they don't tell the true story. In fact, more the investment means more the vulnerabilities. So that's a paradox. And that can perhaps only be addressed through bottoms-up approach, through community resilience and all. ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े numbers, इतने $billion हम बोल रहे हैं तो वो किसी किसान की जेब में जा रहे हैं। Unfortunately, that's not what happens, especially when you work on mitigation, but that's necessary. That numbers are rising and will continue to rise, and there is strong commitment. But there are better ways to leverage money in ways such as blended finance and so on and so forth. तो उसके बारे में हम और hopefully चर्चा करेंगे। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी ज़्यादा पैसा जो है मिटिगेशन में जाता है, अडेप्टेशन में नहीं जाता है, एंड देयर इज़ प्रॉब्ली दिस कॉन्शियसनेस कि ये थोड़ा और बैलेंस होने की ज़रूरत है। एंड जस्ट बिफोर कमिंग ओवर हेयर हम चाय पे चर्चा कर रहे थे, समीर एंड माई सेल्फ, एंड समीर गिव मी अ फ्रेज टू मेंशन हेयर, मनी एट बेस्ट कैन बी ग्रीस, इट विल नेवर बी द फ्यूल और ऑयल। थैंक्स अमित। एंड अभिनव, जैसे अमित ने बात करी कि पैसा जा रहा है बट वो बेहतर तरीके से जा सकता है, तो अगर हम CSR फाउंडेशंस की बात करें, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कन्वेंशनल CSR से, तो आप लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं टिपिकली? एक्सिस बैंक फाउंडेशन या जनरल कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, क्लाइमेट चेंज प्राथमिकता है या नहीं है, और क्या काम है जिन पे आप काम कर रहे हैं? तो एक्सिस बैंक फाउंडेशन मेनली रूरल लाइवलीहुड्स
पे फोकस करता है। पर अगर मैं CSR इन जनरल सेक्टर की बात करूं तो हमारी जो सोच अभी जिस स्टेटस पे है वो 3 प्राइमरी स्टेक होल्डर से इन्फ्लुएंस हो रही है। एक हमारे जो पार्टनर्स हैं NGOs, जो खुद कुछ NGOs ने क्लाइमेट एक्शन पे काफ़ी कुछ हद तक इम्बेड किया है अपनी स्ट्रैटेजी में। प्रधान को देख लें, दे हैव अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस that is being created. The second NGOs are there, like somewhat there. They are starting to think about and get influenced and informed by some pioneers in civil society like Pradhan. तो कुछ लोग अभी कुछ पार्टनर्स जो हैं वो उस जर्नी में चालू हो रहा है उनका काम, और कुछ हैं जो फंडामेंटल्स उनके सही हैं, वो काम कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन पे, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन कुछ अलग नहीं है, इट्स अ लेंस, इट्स अप्रोच टू काइंड ऑफ लुक एट डेवलपमेंट एक्शन ऑल्सो। सो तीसरा ये कैटेगरी, तो ये एक हमारा इन्फ्लुएंसर है या इन्फॉर्म करता है CSR को। दूसरा जो हमारा स्टेक होल्डर है ऑब्वियसली बोर्ड। मैं 2 ऐसे बोर्ड्स मीटिंग्स में शामिल रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के, एंड आई ओवर द लास्ट डेकेड और सो आई हैव सीन दैट because board members are also informed, some are also obviously exposed to the in general events that happen. Climate change is being talked about more and more in general spaces, in media. There are also certain board members who have been in the field, who understand the depth with which climate change really impacts communities and most vulnerable communities in our country. So वो भी mix है। तो what I have been noticing that this discourse on climate action is increasing. The sensitivity towards climate change, addressing the issues is increasing at the boardroom. इसमें थर्ड स्टेक होल्डर जो है वो है CSR की टीम्स जो खुद की हैं उनकी। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक CSRs में जो लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर चुके हैं काफ़ी समय तक, वो अभी ज़्यादा आपको दिख रहे हैं कि दे आर नाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड वर्किंग इन द CSR स्पेस। सो they are also bringing that sensitivity. They are also able to inform both the other key stakeholders, both the board as well as the NGO partners that work. So there is action happening now. Coming to the priority, ki is it becoming a priority for CSR? So प्रायोरिटी बन रहा है, पर प्रायोरिटी को कैसे हमको ग्राउंड पे उतारना है उसमें अभी काफ़ी जर्नी तय करना बाकी है। मे बी व्हेन वी कम टू द सेकंड राउंड आई कैन शेयर मोर। थैंक्स। Now I'll come to you. ITC looks at your CSR investment as social investment along with your business. You have been working in sustainable agriculture for long. So again, from that perspective, when you're looking at it from a social investment around the business, how does that change the focus? Thank you, Shashank. And first of all, I take this opportunity to thank Pradhan and Axis Foundation to organize such a good workshop. So before moving to my thing, I just wanted to set a context of it. As a son of a farmer, as an agriculture graduate and a manager from agriculture. Yesterday I was just discussing to my father regarding that play which has happened. He suddenly asked me, कि हमको अंतिम जन कैसे बोला? He was annoyed with that particular thing called antim jan. That's the perspective which we need to change. He said me, कि I am the first jan. I give you food. I give you forest. Then why am I an antim jan? Then I asked him, कि what should be the solution of that next thing? So he said that what were the responses of the people in and around? So I said everybody was telling कि हम खींच लेते हैं. So he said that's the issue. He said छोड़ना चाहिए था, पीछे जाना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था. So that is something is very important. Are we looking from our lenses? Are we asking questions to ourselves, thinking that we are understanding farmer a lot?
setting the context, I just wanted to take it because I just want you to take outside, जैसे कल बता रहे थे कि अंतिम जन याद रहेगा, अंतिम जन नहीं याद रहना चाहिए, पहला जन याद रहना चाहिए. Looking into three parts, that's the community part of it. As an organization, I am an agriculture company, a conglomerate, larger conglomerate focusing on agriculture. So, Shashank, I just wanted to take some few minutes to put in the three part. I'll give you only 2 minutes. Yeah, okay. So, credos part of it. Putting nation first, sab saath badhenge. That's the credos of my organization, which means inclusion as well as innovation, putting nation first, innovation, entrepreneurship. So what am I? I'm a company with full of entrepreneurship skills. So that's one point. Second is priority, setting an ambition for my company, larger thing. Second thing is committing ourselves for planet and people. Committing with numbers. ऐसा नहीं कि हम कर लेंगे, committing with numbers. Third thing is joining hands. सब लोग यहाँ बैठे हैं, we need to join hands, forge a relationship, because this is not an easy task. Final innovation तो important है, we had startups. Unfortunately, all startups were only discussing mitigation. Nobody was discussing resilience. That's an area which Global South has to think of. So these are some points which I thought ki initial has a part of. These are also my priorities. I can set in numbers, but may not add so much value. But these are some areas, 4 areas which I want the next panel also to think on. That's it from my end. Thank you, Shashank. Thanks. So already some pointers, not enough is happening on adaptation, focus is largely on mitigation, not enough is happening on resilience. So Sameer, I hope you're taking notes. And innovation, coming to innovation, Matilda, I want to bring you in here because IndusInd Bank has been looking at like all your work, but also climate related work through multiple lenses, research, innovation, financing. So what all is happening at IndusInd? Thanks Pradhan and Access Foundation for inviting me, and it's a privilege to be part of this conversation which is really critical for our existence of all of us. So firstly, IndusInd principle is good ecology, is good economics, and I think it emphasizes the need to really work on the current challenge of climate for a better future for all of us. So when we look at IndusInd CSR, sustainable environment is a very critical allocation in our overall CSR budget. And like on the bank side, maybe we would be working more on the mitigate, but when you're looking at purely CSR, you're looking at adaptation, where community is at the core and building community resilience. And this is possible only when we intervene in terms of long-term project. We are looking at collaboration and convergence with government and collaboration with multi-stakeholder, be it academia, technology, innovation, and technology and innovation with local wisdom. So that is the core to our CSR implementation. And when you're looking at technology, in the wash space, right, which is very critical for the rural ecosystem, we have partnered with ASCI, which is the Administrative Staff College of India, which is the convening body for the India Innovation Hub for WASH. And we are working very closely with the district administration to identify the problems at a district level. And then ASCI goes back to the ecosystem of social innovators, and these are all SME, MSMEs, and then 12 top innovations were presented at the district level. District then shortlisted 2 or 3 innovations, and we along with ASCI are implementing in one block the proof of concept and the impact, and the district then will scale it up in the remaining blocks. Now these innovations could be on fecal waste management, grey water management, distribution of water. So what is happening is that using CSR as a catalytic funding, we are unlocking the money from the government, right? So this is one aspect. The other aspect is that when you're looking at data, blockchain, information, this is still lacking. So we have now partnered with a premium institution like IIT Madras, where we're working on action-based research
on agroforestry, and also looking at planetary variables, and also, satellite imaging, which was mentioned in the previous panel discussion, and how we look at 100 years data and provide advisory not only to the district administration and the state, but actually create community leaders, community champion, where this advisory can be communicated. So what you are trying to do is that you are making that community actually resilient to future challenges which can come their way. At the same time, you're being proactive and trying to work on identifying how these variables or indicators will affect life and livelihood at the community level. So I think what is very important when we look at a climate lens is that we can all keep on talking about organic, regenerative agriculture, but till the time you don't give agency and provide that income source for that farmer, it's always what's in for me, right? And like we mentioned in the previous panel discussion, and what Amit mentioned just now, it's like they are the first gen, right? Community comes first. So we all have to take care that the community is resilient in terms of the long term. So these are a couple of innovations that we are looking at, but we're also looking at revolving credit. How do we actually empower the women entrepreneurs when it comes to procuring seed, solar irrigation pump, drip irrigation, all these climate resilient practices, and how they can use revolving credit as a financial support seed capital. Yeah. Sure. Thanks Matilda. And आपने बताया कि IndusInd CSR adaptation पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, एक कम्युनिटी बेस्ड लोकल अप्रोच लेकर, और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो IIT मद्रास हो या आस्की हो, कैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाए जाएं, जिससे कि गवर्नमेंट की फंडिंग को उस डायरेक्शन में लाया जाए. इसके अलावा आपने कम्युनिटी को रेजिलिएंट बनाने की बात करी. सॉरी, मुझे रेजिलिएंट की हिंदी नहीं आती, बट कम्युनिटी में वो क्षमता लाने की बात करी कि वो क्षमता उजागर करने की बात करी कि अगर कुछ चैलेंज आ रहा है तो कम्युनिटी उसका सामना कर सकती है. और साथ ही साथ जब ये कर रहे हैं तो कम्युनिटी खुद निर्णय ले सके, कम्युनिटी के पास जो भी रिसोर्स चाहिए वो हों, जिससे कि ना सिर्फ वो निर्णय ले सके पर उस पर एक्शन भी ले सके, इसकी ज़रूरत के आपने बताया. और रिवॉल्विंग क्रेडिट एक मैकेनिज्म की तरीके से आपने बात करी. सिद्धार्थ, आपको मैं लास्ट में ला रहा हूँ बिकॉज आपके पास एक बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस है एज अ collaborative which has been focusing on climate action for a long time now. You have experience of engaging with a very diverse set of funders. So how have you seen shift happening in the funder mindset, and especially philanthropic funder mindset? Thanks Shashank and thanks Pradhan for having me. तो कुछ points तो I think already Abhinav और Matilda ने touch कर लिए हैं, but और आई थिंक कल से मैं मतलब ये भी सुन रहा हूँ कि कम्युनिटी का जो है और कम्युनिटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है और हमें उनको आगे लेके आना है. तो आई थिंक 2011 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था इन्वेस्टिंग इन एपोकलिप्स. उस किताब में स्टीव और डगलस ने बोला था कि कैसे जो क्राइसिस होती है सिचुएशन, उसको कैसे मैक्सिमाइज करके उससे प्रॉफिट बनाना है. तो वो एक किताब 2011 में लिखी गई थी. तो अभी आज हम क्राइसिस सिचुएशन में हैं, तो अभी क्या है, एक चीज़ तो समझ आ गई है कि ऑब्वियसली 75% डिस्ट्रिक्ट्स वल्नरेबल है इंडिया में, और आई मीन जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो सफिशिएंट नहीं है इस समय फाइनेंसिंग के लिए. ऑफ कोर्स अडेप्टेशन के तो नंबर्स भी नहीं है हमारे पास, बट एक फिगर है जो कि हर साल हमें 11 लाख करोड़ की ज़रूरत है फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. अब ये फंड जो है और एक कलेक्टिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं इस टेबल पे, एंड आई मीन वी बीन टॉकिंग अबाउट इट सिंस येस्टरडे. तो वो तो है, लेकिन एक केयरफुल, हमें केयरफुल वे में अप्रोच करना है कि जो सॉल्यूशंस हम लेके आ रहे हैं, राइट, वो सॉल्यूशंस जो हैं वो इंश्योर करें कि एक्चुअली जो नीड है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जो डिस्कशंस हो रही हैं, वेदर इट इज़ वाटर, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, वेदर इट इज़ फॉरेस्ट,
तो उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं या जो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जहाँ पार्टनर्स बहुत सारे बैठे हैं, कल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, तो उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम मद्देनजर रखते हुए वो काम करें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन वो बुक का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज जब कैपिटल आएगा तो उसके साथ हमें ये भी सोचना है कि बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। तो अभी फिलैंथ्रोपी की जहाँ बात करें, हमने अभी एक आईसीसी ने एक अभी रिपोर्ट निकाली थी, ट्रेंड्स इन क्लाइमेट फिलैंथ्रोपी, जिसमें हम क्लियर कट जो ट्रेंड्स देख रहे हैं वो कुछ ऑलरेडी मेंशन हुए हैं, बट उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि न्यू एज फिलैंथ्रोपीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच। तो उसमें क्या है, वो लीवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने को भी तैयार हैं, सेक्टर्स के साथ भी तैयार हैं। तो वो एक कैपिटल है जो अनरिस्ट्रिक्टेड है और जो यूज़ हो सकता है इन अ मैनर दैट इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। तो वो एक है। सेकेंडली, हमने ये भी देखा है कि 2018 से लेके 2023 तक ऑलरेडी जो मेंशन हुआ है 2.2x फंडिंग फिलैंथ्रोपी में आई है, वेदर इट इज़ फ्रॉम CSR, whether it is from foundations or whether it is from individuals. तो एक हमें वो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो दिख रही है कि ये मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और है। बट अभी भी दो चीज़ें और निकल के आई थी उस रिपोर्ट से। एक था कि जो वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें इंडिया में, और उसके साथ अगर हम फाइनेंस कैपिटल कहाँ फ्लो कर रहा है उसको मैप करने की कोशिश करें, तो वो कोरिलेशन आज भी नहीं बैठ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टन एरियाज जैसे असम हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हो गया, उसमें अभी भी जो कैपिटल है वो लेस देन 2% फ्लो कर रहा है या 1% फ्लो कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे फंड जा रहे हैं, कहाँ पे नीड है, नीड बेस्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं देखने की। और सेकंड थिंग ये थी कि कुछ सेक्टर्स जो हैं या फिर जो उनके सब सेक्टर्स हैं या सब एरियाज़ हैं, उसमें फंडिंग ज़्यादा जा रही है। जैसे कि हमने अभी कल से बात की, एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर के रिलेटेड सेक्टर्स हो गए या एनर्जी हो गया, तो फंडिंग उसमें ज़्यादा जा रही है। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पीछे रह जा रहे हैं, like they also need funding but they also need to be brought in the fore. और थर्ड थिंग है जो सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी में दिखने को आ रही है, दैट इज़ द 3 levers, बेसिकली आई प्लेस इट डाउन। एक है इम्प्लीमेंटेशन, जो 60-65% जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहा है। एविडेंस बेस्ड जो प्रोग्राम्स है उसमें भी अब पैसा जाने लगा है, सो दैट्स अ गुड थिंग कि एविडेंस बेस्ड बैक रिसर्च, जैसे मटिल्डा वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट इनोवेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस आई वुड से हियर इज द कैपेसिटी बिल्डिंग पार्ट। अब कैपेसिटी बिल्डिंग को भी किस तरह से हम देखेंगे और कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट पीस है, बिकॉज बोल तो देते हैं हम कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, बट व्हाट आर द पैरामीटर्स टू डू इट एंड वेदर वी आर डूइंग इट इन मैनर कि हम फिर ओनरशिप की बात करें और उनको एट अ लेवल लेके आ जाएं। और हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू द कोलैबोरेटिव एज वेल कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो अच्छा काम कर रही हैं उनको भी लेके आएँ सामने, उनके साथ भी। और हम हमेशा, एज अभिनव ने बोला था, हम क्लाइमेट को एक लेंस ही मानते हैं और हम ये सोचते हैं कि को क्रिएशन और वर्किंग विद दोज ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैं अभी सामने रखना चाहूँगा और इसके बाद आई थिंक आई कैन कम बैक टू मोर। थैंक यू। थैंक्स सिद्धार्थ। एक जो कंटिन्यूइंग थीम जो मुझे सुनाई दे रही है वो है थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। मतलब कुछ कुछ हो रहा है पर काफ़ी कुछ और होना बाकी है। चाहे अमित आपने बोला बेहतर तरीके हो सकते हैं, हमने बात करी कि अंतिम जन नहीं, पहला व्यक्ति वही है जो कि इस समय मतलब फ्रंट लाइन पे तो वही कम्युनिटी ही खड़ी है। तो एक सवाल फंडर कम्युनिटी से मेरा ये है कि जब ये अवेयरनेस है तो गैप कहाँ पर है जिसकी वजह से ये अवेयरनेस एट अ लार्ज स्केल सिस्टम लेवल ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं कन्वर्ट हो पा रही है? क्या ये आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम बात कर पा रहे हैं, और क्या चाहिए इसको एक पूरे सिस्टम लेवल पे ट्रांसलेट करने के लिए? सो विथ दैट Matilda, probably I'll start with you. If you could share some gaps that exist right now and those that need to be plugged immediately. I think what I've also mentioned before, it's not that work is not getting done. So one is that work is actually getting done, but in a country with so many other social problems, right? The global south is grappling with poverty, education. So obviously you have funds getting, distributed to a larger set of issues which are there. Other thing is that there's no actually data or reporting mechanism where you can actually identify that this is where the SDG need is,
this is where actually the money is going. Whatever information is currently available is some analyst or some data collection organization looking at individual annual report and just picking up the data. So data, blockchain, AI is going to be very, very important to really understand where we are, what type of investment is required, and where we need to focus going forward. So if you look at also from the regulatory perspective, which was covered in the previous panel, you have the business responsibility reporting, which is mandated by SEBI for the top 2,000 odd organizations. Now it's becoming more of a mandatory stick approach, right? Even there, when you're talking about, till the time you don't mainstream development through private sector, you will not really see it at scale, right? How do you ensure that when you are looking at even ESG, right? What's in for the corporate? How it's going to impact its profitability? If that can be communicated at every level, right? I feel that will make a differentiating impact where everybody will then start looking at climate with the true sense of, keeping or restoring the planet for the next generation. Otherwise, today it is still maximization of profit. I feel that's where, the challenge lies. So work is being done, but it's being done in silos. Yeah. Siddharth and Amit, I would want you two to weigh in on this aspect of multi-stakeholder cooperation, collaboration. So what are the hindrances and what is stopping that from happening, or what can accelerate this to happen better? So maybe either one of you can go first. So it's human nature, coordination is never easy. जहाँ भी चार बर्तन होंगे खड़कने की आवाज़ ज़्यादा होगी. So that seems to be the crux of problem, and we have different perspectives. But if we can have an ecosystem where this is encouraged by design and for design, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो आगे जाकर के समस्याएं आती हैं वो थोड़ा प्रीएम्प्ट हो जाती हैं. उदाहरण के तौर पे blended financing, while this terminology or phrase is very famous, it is very, very difficult and complex. पॉलिसीज़ हैं जो अभी अलाउ नहीं करती हैं कि सरकार का पैसा, एमडीबीज़ का पैसा और सीएसआर पैसा पूल इन हो सके. Different rules apply. So if that cannot happen, then coordinated thinking does not happen. तो ये कुछ gaps हैं जो hopefully address हो जाएंगे. Progress तो हो ही रहा है, जैसे social stock exchange आया, it becomes easier for not for profit entities to raise money, but उसी तरीके से उसी में ही देखें कि एक फॉरेन डोनर है जो आपको डायरेक्टली ग्रांट दे सकता है बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं कर सकता है. एक डोमेस्टिक सीएसआर फंडर है जो एक्सपेंडिचर इनकर कर सकता है बट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, हाउसो एवर सपोर्टिव दैट इज. तो ये थोड़े से एरियाज हैं जिनमें शायद और कैलिब्रेशन की ज़रूरत है, विच विल मेक थिंग्स वेरी मच ईजियर. एंड सेकेंडली आई फील कि जब टारगेट्स और मनी becomes the primary driver, then activity and intervention recedes, the quality of intervention. तो डिज़ाइन होना चाहिए कि क्या हमारे को bottoms up achieve करना है, and if everybody is aligned to that, then I think we can do much better. Siddharth? I think कुछ points आपने already touch कर दिए, but apart from that, और हाँ मतलब कोलैबोरेशन बोलना आसान है और करना मुश्किल है जैसे कि अमित ने बोला, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है विच आई फील इज़ द फैक्ट दैट हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटेड मॉडल्स कुछ जगह पे आइसोलेटेड वेज में हैं, बट उसको कैसे हम लोग रेप्लिकेट करें या कैसे उन डेमोन्स्ट्रेटेड पायलट्स को यूज़ करें, वो थोड़ा सा आई थिंक एक गैप है बहुत बड़ा. बिकॉज उसमें क्या है कि देन अगेन अपने जो टारगेट्स हैं या जो अपनी कंप्लायंसेस हैं उसको मैच करने के चक्कर में क्या होता है, वो जो डेमोन्स्ट्रेटेड पायलट्स हैं या जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं. तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एटलीस्ट वी स्टार्ट एट समवेयर, हम एक टेबल पे आके बात तो शुरू करें कि एटलीस्ट क्या है और कैसे होगा,
और दूसरा क्या है, देखिए गोल तो कॉमन है, सबको पता है कि क्या करना है और मोर एंड मोर डेटा के साथ वो क्लियर हो रहा है, बट कौन क्या करेगा और रोल क्या है किसका, तो आई थिंक वो जो चीज़ है वो अभी भी क्लियर है नहीं, बिकॉज जैसे मटिल्डा वाज टॉकिंग अबाउट साइलोड अप्रोच, और वो आज भी एग्जिस्ट करती है, वो साइलोड अप्रोच हमें सबको पता है, बट उसको ब्रेक कैसे किया जाए इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टुवर्ड्स, बट चैलेंजेस उसमें हैं अभी इस समय, और वो साइलोज एवरी लेवल पे हैं, हर जगह पे क्रिएट होते हैं, और टॉप से आई थिंक कल कोई बोल रहा था कि वो टॉप से साइलोज नीचे आते हैं, आई थिंक सर आप बोल रहे थे, तो वो साइलोज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट उनको कैसे हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में ब्रेक करें वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक वो है इम्पैक्ट की बात है, जहाँ कि हम इम्पैक्ट पे अग्री कर रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए इम्पैक्ट क्या है, सबके लिए आई थिंक इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए इम्पैक्ट है कि इनकम एनहांस करना है, किसी के लिए इम्पैक्ट है कि नहीं कार्बन को हमें देखना है, किसी के लिए इम्पैक्ट हो सकता है कि हमें इतना फंड डिप्लॉय करना है। आई थिंक वो इम्पैक्ट की डेफिनेशन ही हमारी अलग अलग होगी जब तक, तो हम कैसे एक टेबल पे आके बात करेंगे कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव। अगर इम्पैक्ट जैसे कि कल से बात हो रही है इज़ टू बिल्ड रेजिलियंस ऑफ द कम्युनिटीज़, इज़ टू वर्क ऑन देयर नॉलेज सिस्टम एंड उनको एनहांस करना है, अगर हम वो इम्पैक्ट लेके चलें तो आई थिंक जो साथ के जो टारगेट्स हैं जो मेजर करने होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी हैं, बट आई थिंक हम उनको मैनेज कर सकते हैं उसके साथ, अगर हम एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट के साथ चलें कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव फॉर द कम्युनिटीज़, समथिंग विच इज़ देयर ओनरशिप और उनके साथ रहे। तो आई थिंक ये कुछ बातें हैं, बट दिस इज़ ऑल लाइक मतलब लग सकता है कि सब नेगेटिव है और कुछ होएगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक इंक्रीजिंगली हम लोग भी देख रहे हैं एज अ कोलैबोरेटिव दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, और लोग आ रहे हैं हमारे पास बोलने के लिए दैट वी वांट टू कोलैबोरेट वेदर इट इज़ CSRs टुगेदर। हमने देखा हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 2 या 3 CSRs ने फंड किया है उस प्रोजेक्ट को। पूल फंडिंग की जो बात है अभी हम शुरू कर रहे हैं, ब्लेंडेड फाइनेंस अमित ने ऑलरेडी बात किया, आई थिंक उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन लास्ट 1.5 ईयर्स से बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, एटलीस्ट हम बात तो कर रहे हैं। तो आई थिंक देर इज़ पॉजिटिविटी, देर आर अपॉर्चुनिटीज़, कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करना है और कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है इज समथिंग दैट मे बी वी हैव टू डू, एंड दिस वी आर ट्राइंग इन फ्रॉम आवर लेवल। Abhinav, you wanted to comment on this? Yeah, I just also wanted to add to what Siddharth was mentioning, and from a climate action context, अगर हम अपने लैंड डेग्रेडेशन की बात करें, वाटर स्कैरिसिटी की बात करें, जो भी लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो उसमें एक चीज़ जो कोलैबोरेशन की बात करें तो जो एक गैप लग रहा है वो है, अगर हम इंटरकनेक्टेडनेस की बात करें, क्योंकि ये सारे क्लाइमेटिक इश्यूज जो हैं वो इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं, पर ये गैप है अभी जो एग्जिस्टिंग, मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक वो इंटरकनेक्टेडनेस को अगर समझ भी पाए हैं तो उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज एंड really work towards appreciating that interconnectedness, and तो उसमें how can we work on it is another question. So that comes with कि unless we have some sort of a, अभी क्या हो रहा है कि projects develop हो रहे हैं, CSR की अगर बात करूँ, projects develop हो रहे हैं, donors can also say fund कि हम long term investment कर रहे हैं एक partner के साथ, पर क्या आप एक ही जगह पे प्लेस बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं क्या? कभी कभी क्या होता है कि आप 15 साल से एक पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, पर 3 साल वो कहीं एक ब्लॉक में हुआ, 2 साल फिर और एक ब्लॉक में आपका इन्वेस्टमेंट गया. It is not moving any needles around climate action because it's a long-term process, we all agree. So I think the gap is that we don't still have a place-based approach. When we have a place-based approach, there will be a compelling sort of goal for the stakeholders to work towards it. Once you have a compelling narrative, a goal, then you will have a collaborative action happening. कोलैबोरेट करना है पर किस पे करें, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू दैट वी फेस. कि हमको पता नहीं रहता है कि हम कुछ कन्वीनिंग करते हैं तो हम किस पे बात करें, किस पे कोलैबोरेट करें. तो अनलेस वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज इन आवर शिफ्ट कि भाई हमको प्लेस बेस्ड अप्रोच पे जाना है, एंड इट कैन बी बोथ जुरिसडिक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस बेस्ड, और इट कैन बी बायोजियोग्राफिक. आई थिंक दैट्स समथिंग विच कैन बी सॉर्ट ऑफ अ सेगवे इनटू a lot of collaborative action towards climate action. That's
a great point, Abhinav, but in the interest of time, I'll move, pivot completely. And I'll talk about this whole point of community first and resilience. When we talk about this, and there are 3 CSR stakeholders sitting here, there's also this element of something measurable, something quantifiable that needs to be available. So when you talk about these factors, these are sometimes difficult to measure. So what is needed in terms of funder education, and maybe Abhinav, you talked about the board becoming aware. So the corporate education on what kind of MEL systems, what kind of approaches are needed to see whether progress is being made or not. So Binoy, we can start with you. One very critical thing which I feel is to, when I say climate in that way, where to invest. The hotspot part is very important. If I am a funder, I would be more interested to understand which are the hotspots. So second is what to invest. Either it is mitigation or resilience. So it also depends upon the location-wise thing. If it is more of an urban scenario, we would be more focused on mitigation part of it. And while resilience will also add in. Second thing is that the stakeholder consultation is very important. How do we look and bring in all the stakeholders? As you say, this is the age of collaborations. Before, if you just go 1 decade behind, people may not be talking much on collaborations. You may not have government sitting and talking in such a workshops. They would just be just giving some sort of thing. So this is an age of collaboration. There are a lot of schemes which is happening. There are a lot of think tanks which talks. Niti Aayog talks a lot on climate, climate vulnerability, all those parameters. Third is M&D. If you look in M&D, is directly related to the clusterization part of it. So for example, if I just give you a climate resilience part of the thing, if I am a farmer, my thing would be, in a bad year, do I get good yield? That's just a simple calculation for me. So as rightly pointed out by Siddharth also, he was mentioning that the impact numbers are different for different people. Yes. The community point of view, the impact number would be different. So my question is, do our MEL systems need to evolve? True. Is the current MEL system attuned to the challenge of climate change? Yeah. So as I was mentioning, that it's also the way how you look into the thing. For example, as a funder, I may be different point of view. I would have the completely different point of view. As a community thing, I would have a different point of view. So all those aspects has to be looked in. Sorry, I'm pushing back on this. I don't get opportunities to push back to funders very often, so I enjoy these. But when we are saying community first, shouldn't our MEL system then become community first as well? Why should there be a funder looks at it from a different point of view? And Abhinav, not to put Binoy in a spot, I will open it for all of you, of saying, how do we need to think about measuring the progress on climate resilience building when we talk about it in a community-based approach? So anyone, any thoughts? Very appreciated. We work along with Pradhan in a couple of districts, like Abhishek also mentioned. We have actually adopted 5 aspirational districts in India, and where we are actually looking at an integrated approach. So we are not, and we're looking at a long term of 5 years, where we're building community resilience bottoms up. So the most important is the implementing partner, right? So if you have an implementing partner who works very closely with the community, okay, who has that credibility over the last, 20, 25 years, and then from bottom ups in terms of a participatory conversation involving panchayat and the other institutions and also the district administration, because you would always want to do X, but if it is not aligning with what is the government priority in the district, you will actually not be able to get the type of support when it comes to conversion and in terms of data, execution, social protection, etc. So when you are actually creating the project, it's very important that you have a detailed DPR, you have a detailed log frame where you actually boil down to activities level. So when you come down to activities level, it actually comes to the community first, right? Because till the time you can always say, I want this particular impact.
But if you don't know how you're going to achieve that impact, and the community, what is the type of activities, what is the type of involvement in the community, how much in terms of training, leadership building, all these things have to be incorporated, because just purely giving funds for one particular initiative is not going to solve the problem. Till the time you don't build the capacity, leadership of the community and the administration. So I think very important is to put a very detailed log frame. It will be different for different corporates or different funders. But till the time nothing that doesn't monitor doesn't get done. So I think for us and also the non-profit ecosystem or the development sector, I feel at some point of time you have to move towards tracking what you're doing. Sure. Thanks, Matilda. And Abhinav, I'll go to you and then Siddharth. Yeah, I think a lot of my answer will revolve around, again, collaborative action. If you are able to achieve and, like you say, redefine some of the MEL framework, like indicators, use technology like satellite imagery, what Matilda spoke of, to measure and attribute change in a certain landscape. I think that is the way forward in my view. And the only issue will how will donors collaborate? How do they share attribution? That is again, something that needs to be worked on, but it has to be in a certain boundary. So again, coming back to what the point I raised, one thing, and I'll stop there. So just one gap, since we are talking of gaps for the next session, one gap that really need a lot of attention from a climate action perspective is that most of the CSR action is through civil societies, obviously. Most of the civil societies and NGOs present here, they've been focusing around working with small and marginal farmers over 3 decades now. Right? The agenda has been the income aspects, right? Development. But since we are talking of climate action, there needs to be more and more attention given to medium, semi-medium and large farmers, because obviously they are the largest users of the resources which are getting scarce. So I think that's another aspect that really needs a lot of discussion. And we had a lot of, nudges on landscape approaches in yesterday's sessions. Looking at farm, not just as farm itself, but the overall landscape, how it is situated in that. What are the interconnectedness between water tables and soil, ability, microbial activities and things like that. So that's another thing that really needs. Siddharth. I think since MEL की बात हो रही थी तो एक पॉइंट रखना चाहता हूँ मैं. हमने ये जो फ्रेमवर्क है ये अडॉप्ट किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम से एंड वो चलता आ रहा है, राइट. आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या हम इस MEL फ्रेमवर्क को इवॉल्व होते देखते हैं इन द मैनर, क्योंकि उसमें लर्निंग की बात है. तो क्या ये जो डेटा है और जो हम एनालिसिस करते हैं क्या वो कम्युनिटी के पास जा सकता है या उनको इन्वॉल्व हो सकता है इन द मैनर कि जब हम MEL बना रहे हैं. बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट व्हाट हैपेंस इज दीज MELs आर मेड इन क्लोज्ड रूम्स आइदर बाय द डोनी और बाय द डोनर फंडर्स, राइट. अब उसको मैं कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व किया जाए बेहतर मैनर में. कल हमें चर्चा कर रहे थे कि प्लेस इकॉनमी की जब बात हो रही थी कि जब कम्युनिटी को डेटा प्रेजेंट किया गया कि इन टर्म्स ऑफ कि आपका एक्सपोर्ट इतना है, इम्पोर्ट इतना है, तो वो खुद हैरान हो गए देख के. तो आई थिंक बहुत सारे सोल्यूशंस क्या वहीं पर ही है ना. हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, बट क्या ये डेटा और MEL को हम कैसे इवॉल्व करें, सोचें कि वो पुराना फ्रेमवर्क को छोड़ के हम कम्युनिटी को साथ में लेके आएँ, उनके साथ मिलके बना सकें. और आई थिंक कुछ प्रयास हमने कोशिश किया है इस बार हमारे NGO पार्टनर्स के साथ. तो अगर आई थिंक वो मोर एंड मोर होगा तो आई थिंक वो MEL की जो रेलेवेंस है वो ज़्यादा होगी और प्रोजेक्ट का सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा. थैंक यू. Amit, any thoughts on this? This is a little complex and there are trade-offs involved. अब आप evaluation पे ज़्यादा investment करें या intervention पे investment करें, you have to take a call. And we've seen, for example, in case of carbon credits, the best of MRV interventions also raises doubt, And often this, the cost of this is more or fairly high vis-a-vis the benefit that is going to the farmer. Of course, this needs to evolve, this needs to improve, but given the fact that, vulnerabilities are also evolving, changing, and there are so many variables in terms of vagaries, there will never be a perfect situation and one will have to take calls. Thanks, Amit. And one thing that I would pose
to Manas is, like, one thing that is coming up is when we are talking about place-based change, or like the way it has been defined, the interconnectedness, a lot of it, Shagun, is coming to the system thinking and defining boundaries of the system properly. So I think that's one pointer I want to leave for the next panel as well. But yeah. On a lighter note, I want to share a personal experience of interconnectedness of climate change. मेरा ससुराल देहरादून में है, अनुप जी। करीब 25 साल पहले मेरी शादी हुई। जब पहली बार देहरादून जाना हुआ सर, तो मुझे शहर से ज़्यादा प्यार हो गया। तो वही सोच करके मैंने सोचा कि शादी कर लेते हैं। बिजली का खर्चा भी नहीं है, पंखे भी नहीं चलते, और देहरादून मसूरी में लाइफ रहेगी नथिंग लाइक इट। आई रिफ्लेक्ट बैक 25 ईयर्स, नो अब सब जगह AC है वहाँ पे, एंड आई डोंट वांट टू गो देयर। So that contributed to my decision of marriage, so interconnectedness of climate change. That's the story of all the marriages. But with that, I would like to conclude. Thank you so much. Thank you for bearing with me. Thank you for tolerating my insolence. But really, really grateful to all of you for sharing in a very candid manner your perspective, the challenges that you're seeing, and look forward to the next panel to solve for us. Thank you, Shashank. Thank you, panelists. Please stay back for the felicitation. I invite Latika George from Axis Bank Foundation to felicitate our panelists.